सर जो डायफोंटिक इक्वेशन है अ, उसमें कितने तो इंटीजर्स वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, कैसे पता चलेगा? ये पता नहीं चलता है कितने सोल्यूशन मिले, बट सी दैट इनफाइनली मेनी सेटिस्फाई करेगा, पर कौन कौन सेटिस्फाई करेगा वो एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है। और जो सर वो फाइंड ऑल इंटीजर्स बोला होगा तो मतलब कितने तो पॉइंट और मतलब वो। इंटीजर्स में डाउटफुल है, और पॉइंट और इंटीजर्स में डाउटफुल है क्योंकि सभी इंटीजर्स तो नहीं काम करेंगे। किस टाइप के टाइप बता सकते हो उसमें, इस टाइप के होंगे। सी उस जी रिजल्ट में टाइप मेंशन है, पर उसमें कौन कौन से आएंगे पॉसिबिलिटी वो दिखा रहा है, नॉट एग्जैक्टली। लुक द लेक्चर नोट्स, शायद इसमें है कि नहीं, मैं रिकॉर्ड देख लेता हूँ। मतलब सर जो कहा हुआ गए फाइंड ऑल इंटीजर्स जो बोला है, सिर्फ दो ही इंटीजर्स निकालने से हो जाएगा या फिर? नहीं, दो इंटीजर्स नहीं, उसका फॉर्म बताना पड़ेगा। लाइक सी दैट, इसमें यदि ऐसा पूछो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि आप इस पीडीएफ को देख पा रहे हो, हम प्रॉब्लम 1.1.3 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और यहाँ से कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपका। और इसमें कहा गया कि ये डाइफेंटाइन इक्वेशन है 11x+13y का 369 सो इनके सभी सोल्यूशन है, इसमें कुछ फिक्स कर दिया कि फाइंड ऑल सोल्यूशन वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सोल्यूशन फाइंड किया है यूजिंग द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो एक सोल्यूशन हमें मिला है, देखो एक्स नॉट हमें मिला 2214, एक बार क्रॉस चेक कर लेना शायद कैलकुलेशन सही हो। एंड वाई नॉट मिलेगा -1845, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। और सी जी सर। आफ्टर दिस गेटिंग वन सोल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन का फॉर्म मिल जाएगा। एक्स जो वाई का इसी फॉर्म का रहेगा, वाई इस फॉर्म का रहेगा, पर टी कौन कौन से काम करेंगे ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते, कौन कौन टी के लिए काम करेगा। बट फॉर सम टी ये जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसी इसी फॉर्म का होगा। गेटिंग मी पॉइंट? जो भी सॉल्यूशन होगा इसी फॉर्म का होगा, यस सर। लेकिन कौन टी के लिए सेटिस्फाई है कंफर्म नहीं कर पाओगे। तो ये इश्यू है। यदि हम कहें कि फाइंड ऑल द सॉल्यूशन, तो आप उसका फॉर्म दे दो कि सर ये सॉल्यूशन का फॉर्म होगा जस्ट जस्ट फाइंडिंग वन सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने के बाद जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म दे दो। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म दे दो, ये कहने के मतलब कि सभी टी के लिए वेरीफाई हो रहा है, बट जनरल फॉर्म यही होगा। यदि कहोगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल फॉर्म क्या होगा सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का फॉर्म यही फॉर्म रहेगा। और कौन कौन से टी काम करेगा, इसलिए फॉर सम टी कहा गया। जरूरी नहीं कि सभी टी काम करे, पर इनफाइनली मेनी टाइम टी काम करेगा, यहाँ पे सही काम करेगा, पर कौन कौन से एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे इस क्वेश्चन में। चूंकि हमें यस सर। तो सोल्यूशन को डिस्कस करना था, इसलिए तीन ही मिला है। बट यदि हम कहें कि सभी सोल्यूशन, तो एक्स निगेटिव हो सकता है, वाई पॉजिटिव हो सकता है, वाई पॉजिटिव हो सकता है, वाई निगेटिव हो सकता है, एक्स पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों निगेटिव हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन की बात किया है, इसलिए हमें तीन ही मिला है। बट इन फैक्ट इसके इनफाइनली मेनी सोल्यूशन होंगे, और कौन कौन से टी के लिए काम सोल्यूशन मिलेगा, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एनी अदर डाउट? नो सर। हाँ, डाउट्स मीन्स किसी का डाउट नहीं, मतलब कि वो कुछ कोशिश कोशिश या पीडीएफ देखा ही नहीं है। हमें कोई इश्यू नहीं है, हम यहाँ बैठते हैं आपके लिए, आपको कोशिश करेंगे तो हम हेल्प कर सकते हैं, और हम आपको बैठ कर थोड़ी पढ़ा सकते हैं। सी, नाउ विल summarize our last lecture, and we started with the Euclid lemma, and this lemma suggests us that I'm talking about proposition 2.1.1, that if a integer a divides b and also divides c, then we can conclude that a divides product of b and c. This is about Euclid algorithm, Euclid lemma, sorry. No, this is not Euclid lemma, sorry. This is straightforward result, proposition 2.1.1. And then we have a Euclid lemma, and this lemma is interesting one. Throughout the course, we'll use this lemma time to time. So just to remember this Euclid lemma. What lemma say that
See the statement, if A divides BC, means product of B and C, and GCD of A with any factor of this product like B, if GCD of AB equal to 1, then we conclude that then A must divide the another component C. And if GCD of AC is equal to 1, then we must conclude that the element integer A must divide B. That means this equilibrium suggests us that if any integer divide product and GCD of that divisor with one component is 1, then the divisor must divide the another component. That is meaning of the Euclidean lemma, sorry. And then we discuss what is prime number, what is composite number, and using the Euclid lemma, we conclude this theorem 2.2.5, and this say that if you have an integer p and p divides product of a and b are integers, then p must divide either a or b. That means at least one of the integer must be divided by the prime p. That is meaning of that. This result is also interesting. So these two result, Euclid lemma 1 and using Euclid lemma we have this result. This is also important result about prime number. So two result is interesting. Then we have summarized something we have discussed. So we can ignore the proof, big proof at least. Then we come to the FERMAT'S theorem. I think we have discussed little bit about FERMAT'S theorem. This theorem is also known as FERMAT'S little theorem. FERMAT'S little theorem. What is the statement of FERMAT'S theorem? What is FERMAT'S theorem? So this is a statement I'm going to read out. Suppose we have I'm talking about theorem 3.0.2. Suppose we have a prime number, and I believe that all of you know what is the meaning of a prime number. Prime number must be greater than 1, and only divisors of that prime is 1 and itself. That means there is no other divisor of a prime number, and prime number is always greater than 1. That means 1 is not a prime number. Also, by definition, we cannot consider 1 as a composite number. Either composite number or prime number both are greater than 1. The prime number is that is greater than 1 integer, which is not divided by any integer, any positive integer except 1 and itself. सर Yes, please. सर किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। एक है बोल रहे हैं, ग्रुप एसएमएस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या नाम है उनका? अनु नाम है सर, अनु। कुछ लोग हैं। ओके गुड, थैंक यू। हाँ, कुछ सब बता दीजिए, बीच बीच में कुछ लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अंशु कुमार, काफी लेट हैं ये लोग। सर प्रीति। हाँ, स्मृति सर वो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही, बट नहीं। अभी तो कोई नहीं दिख रहा, ये तो कोई दिख नहीं सर रहा। हो गया ज्वाइन मेरा। हो गया। स्मृति किस बैच से हो? सीएस का हो कि मैथ के? क्योंकि सर सीएस। अच्छा, एक चीज और, कुछ नए स्टूडेंट ज्वाइन किए, मतलब कि एडमिशन लिए हैं, उनके पास डाटा मेरे पास मिल चुका है, लेकिन आपके पास डाटा हो तो उनको भी आप ज्वाइन कर लो, जिसको भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता हो इस ग्रुप का। कर दिए हैं सर। है? कर चुके हैं। और जैसे ईशा निधि है, सुदर्शन है, और 2-4 लोग और है जिसके जो इसके पास पावर है कि एडमिन जो ऐड कर सकता है, तो प्लीज हेल्प मी। मतलब लिस्ट बहुत बड़ा है, मुझे क्रॉस चेक करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सर मैथ्स के सारे लोग ऐड हैं। मैथ के, व्हाट अबाउट सीएस? सीएस का कोई स्टूडेंट है जो बता सके? एडमिन बना दिए थे एक को सर, 1-2 लोगों को। कौन है वो एडमिन? बोल दिया है। एडमिन कौन है सीएस का? मनीष गुप्ता को बनाए थे सर एक। मनीष जी आप हो? मनीष खुद ही नहीं, क्या एडमिन बन गए? कौन, कहाँ से ढूंढ के लाए थे मनीष को? वो तो खुद नया आया था सर, एक दिन पहले। वो खुद ही गायब हो गए ये। सर इसमें नंबर भेज रहा था।
प्लीज यार। सर मैं ऐड कर दिया हूँ सर सीएस के सभी लोगों को। हाँ, सीएस के जितने स्टूडेंट आप ऐड कर लो, तो बहुत बड़ा लिस्ट है। मुझे लगता है मैथ में अराउंड 40 स्टूडेंट है, समथिंग 40। कितने सुदर्शन मैथ में? सर 42। हाँ 40, सब 42 को आप ऐड कर लो। और सर सीएस में 41 ऐड है सर, एक का नंबर नहीं था, जो नंबर था ना सर वो व्हाट्सएप पे नहीं है नंबर। चलो ठीक है, 41 हो गया है। किसका है जो वो नंबर मुझे रेड करके भेज देना, ठीक है? वो नंबर लिख के भेज दो, ठीक है मैं सर। डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दूंगा। ये स्टूडेंट का नंबर व्हाट्सएप ठीक नंबर नहीं है, तो अब मैं रिपोर्ट कर दूंगा कम से कम। तो 41 को। और ठीक है। सीएस में कितने स्टूडेंट है? 37 है सीएस में सर। और 37 सभी जुड़े हुए हैं। यस सर। हाँ, क्लास ज्वाइन करेंगे, नो डजंट मैटर, इस ग्रुप में होना चाहिए। वो स्टूडेंट के ऊपर है क्लास लेना चाहे कि नहीं लेना, वो सब टू हिम, बट इस ग्रुप में होना चाहिए ताकि हम रिपोर्ट कर दें कि हाँ सभी स्टूडेंट जुड़े हैं। अब उनके ऊपर है कि वो पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता, या सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। अब सबको पता है कि सिचुएशन काफी टफ है। यूनिवर्सिटी मुझे कम चांसेस दिखता है कि यूनिवर्सिटी 23 के बाद ओपन हो। पता नहीं आप लोग क्या ऑब्जर्वेशन है? ओके नहीं। So we'll again recall the Fermat's theorem, and this theorem is method. This say that we have a prime number and we have any integer such that the prime number p does not divide the integer a statement. We will get this statement. And this is an interesting method in number theory. They say that if you divide p to this integer a power p minus 1, will always get the remainder 1. When we divide this big integer a power p minus 1 by integer p, we will get the remainder 1. And this theorem is also known as Fermat's little theorem. So when you read Fermat's little theorem, this is the same result. In some book it's just referred to as Fermat's theorem. In some book it's mentioned as Fermat's little theorem. And I also incorporated the proof of this theorem, Fermat's theorem, and I think proof is not little bit difficult. We'll try to understand. We'll try to understand this proof. Not a big one. We'll try to understand this proof because the result is very interesting in number theory. That's why we should know the proof of this result, Fermat's theorem. So what I did here, step by step, we'll try to understand. And if you feel any difficulty, please mention at that point. What I did, first step, what I did, I just consider a set which has p minus 1 integers. See what is the form of integers. This is a, because a is given. See what is information is given here in Fermat's theorem. Prime p is given. Some p is given, which is prime number, like maybe p maybe 5, maybe 7, maybe 11, whatever. But p is a prime, and a is integer. So these two information we have. With third information that p does not divide a. Using three information, we have to conclude that a power p minus 1 is congruent to 1 modulo p. This is your conclusive point. So what I did, because a is given, then I consider this set. I call that set is S, and which consists of this type of element: a, 2 times a, 3 times a, 4 times a, and so on, p minus 1 times a. So this is the set we consider. अच्छा, कोई आप में से कोई बताए, एनीवन प्लीज टेल मी, इसका कोई भी एलिमेंट p से डिवाइड हुआ कि नहीं? नहीं सर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सर पी प्राइम द है और प्राइम है। उसके लेस देन 1 तो किसी भी नंबर डिवाइड नहीं होगा यस प्लीज अगेन प्लीज। सर, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है और उसका नीचे से कोई भी नंबर तो डिवाइड नहीं करेगा। बट दिस नंबर इज नॉट लेस देन p.
Like see that, think about P is 5. Think P is a 5 and A is equal to 4. Think about A is equal to 4, integer A is equal to 4, then and P is 5. Agree? Then can you consider this S? S में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? If A is equal to 4 and P is equal to 5, तो इस S में क्या क्या एलिमेंट आएगा, कोई बताए क्या? 4, 8, 12 and 16. 4, 8, 12 and 16. Good. Yes, sir. And now see that means this set has some element which is greater than 5. So we cannot say that all the elements of this set S is less than prime P. बट सर 5 के मल्टीपल का कोई एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में। क्यों, क्या रीजन है बताओ? सर क्योंकि पहले ही हम बोल चुके हैं कि S इज नॉट ए, P इज नॉट डॉट डिवाइड A, और उससे छोटा वाला भी तो जो फैक्टर्स होगा तो कोई भी नहीं आएगा। Yes, like see that, yes, good. Your idea is 1 minute. There is some disturbance from my side. Please. सर P प्राइम है तो P-1 इवन है ना, इसलिए नहीं होगा। प्लीज अभी बताते हैं, कुछ घर में डिस्टर्बेंस है, प्लीज प्लीज। Yes, please. Sorry. You tell me. What is the reason behind why no elements of this S is divided by P? सर P A को डिवाइड नहीं कर रहा है सर, तो उसके सारे मल्टीपल को भी नहीं करेगा। मल्टीपल कहां तक आ रहे हैं, पहले ध्यान से देखो, मल्टीपल कहां तक जा रहे हैं? सर ऊपर मेंशन किया गया है सो P इक्वल टू नॉट A, यस, गुड, यस। इसलिए नहीं डिवाइड करेगा। सर मल्टीपल सिर्फ P-1 तक ही है, इसलिए P-1 तक ही है, P-1 तक ही है, because see that I write this same thing, why just next 3 lines I try to explain why no elements of the set S is divided by the integer P, and try to write in the next 3 lines, try to explain. Now see that what I write here, as it is given that P does not divide A. This information we have already, so no doubt now what I have mentioned here somewhere. And also see that I noticed that P does not divide K for all K integer, positive integer which is less or equal than P. That means for all K belong to 1, 2 and so on P-1. Agree? ये लाइन कह रहा है P किसी इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा इस सेट का, बिकॉज एवरी इंटीजर, एवरी K इज लेस देन P, तो कोई नंबर अपने से छोटे नंबर को तो डिवाइड नहीं करने वाला है। दैट्स व्हाई आई राइट हियर, नोटिस दैट P डज नॉट डिवाइड K फॉर ऑल इंटीजर K which belong to this set. This set is consisting of element 1, 2, 3 and so on P-1. Agree? Anyone? Please agree. Yes sir. Yes sir. Now see next sentence what I write, what is information we have, what is information it is given in the statement. Since P is a prime, it is given and P does not divide A, then we conclude that
P does not divide A times K. Why? Because P is a prime and P divide A times K, that means P must divide at least one. P either divide A or divide K, but P does not divide K and also P does not divide A. It is given that. That's why P must not divide product AK, where K belong to this one. And see, A इसका एलिमेंट कैसे दिख रहा है? इस सेट को जो आपने सेट पकड़ा है 1 2 p minus 1, इसमें जस्ट a मल्टीप्लाई करके यहां से मिलेगा a, यहां से 2a 3a समथिंग लाइक p minus 1. That's why I try to explain in this way why no element of A is divided by p, because see, a is not divided and this one, think about this one by one. This is 1 times A. So A is not divided, 1 is also not divided by P. That means this is not divided by P. Think about this one, 2 times A. A is not divided by P and 2 is also not divided by P because 2 is less than P. That's why this product is also not divided by P. Similarly, this one, 3 times A. It is given that P does not divide A and P also does not divide 3 because 3 is less than P. That's why this part is also not divided by P and so on. So that's why I write in formal way that no elements of S is divided by the integer P. And that's why I conclude that this implies that no element, if divides, then you can say that remainder is 0. That means remainder is 0. That means no, that this does not imply that no elements of S is congruent to 0 modulo P. If you are agree, then I can move to the next level. Yes, sir. Now, our another claim is that no two elements of S are congruent modulo P. So I verify this line, no two elements of S congruent modulo P. Like if indeed, if you have two elements U and UV, sorry, U and VA, sorry, this is typo error. I will correct this one. This is VA. Please read, is this a VA? This is not UV. UA and VA belong to S, where UV is element of this one, 1 to P minus 1, such that UN and VA are congruent modulo P. That means UA is congruent to VA modulo P. So by definition of congruent, we can write P divides UA minus VA by write in the next sentence, and then we can write this dividing part as a this one, U times minus B times A, just to move A outside. Then you can write same line in this way, P divides U minus V times A, and C, P is a prime and P divides U minus V times A. Okay, and it is given that P does not divide A. That means P must divide U minus V, because we have already discussed this result. I'm going to show you in the previous lecture that if P is a prime and P divides product of AB, then P must divide at least one of the factor, either A or B, either A or B. At least one of the factor is divided by P, because P is a prime, and we have discussed proof of this result. So using that one, because here we conclude that P divides this product U minus V times A, then P must divide at least one of the factor, and it is already given in the statement that P is not dividing A. P does not divide A. That means we conclude that P must divide U minus V. P must divide U minus V.
And by definition of congruent, this means we can write in this way. That means U is congruent to V modulo P. U is congruent to V modulo P, but see, U and V is coming from this set 1 to P minus 1. This is a contradiction. दोनों नंबर U और V दोनों P से छोटे हैं और दोनों का डिफरेंट लोगे, सॉरी U and V मस्ट बी डिफरेंट, तो ये U और V डिफरेंट है और दोनों P से छोटे हैं, तो इनका माइनस करोगे तो P से डिवाइड होने वाला नहीं है. दैट मीन्स that is a contradiction. U cannot be congruent to V modulo P. But we are getting here that U is congruent to V modulo P. That is a contradiction. Hence, no two elements of S are congruent modulo P. So I write in this way, informal way, that no two elements from the set S are congruent modulo P. इसका मतलब ये है कि किसी दो एलिमेंट को डिफरेंस लोगे फ्रॉम द सेट एस, तो उनका डिफरेंस पी से डिवाइड नहीं हो सकता है. तो इन फॉर्मल वे आई राइट दिस वन, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. यू चूज एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट एस एंड टेक द डिफरेंस ऑफ दोज टू एलिमेंट्स, देन एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट, देन वी कैन नॉट divide by the number P. That is meaning of that. Think about whatever I consider the set. First we observe that no elements of S is divided by P. That means when you divide any number of S by P, will not get the remainder 0. Will not get the remainder 0. This is first your observation. Your next observation is that if you choose any two different elements from the set S, then the difference of those two elements, different element, is not divided by the number P. So this is your next observation. What I write here. Now you tell me, because we have observed that no element of this S is divided by P. Now you tell me, if you choose any element from the set S and if you divide by P, what is the possibility for the remainder? कोई S से कोई एलिमेंट पकड़ो, सर 1 to P minus 1 रिमाइंडर हो सकता है. 1 to P minus 1. Good. Yes. See, because the divisor is P, and just you observe that 0 we cannot get the remainder because no elements is divided by P from the set S. That means remainder either 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है. मैक्सिमम कहां तक जाएगा? P minus 1. So that is the range of the remainder, either from starting from the 1 to P minus 1. And from the next came that no two elements of S are congruent, means कोई दो एलिमेंट सेम रिमाइंडर नहीं दे सकता है. 2a 3a को P से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल, सी दैट इफ यू चूज a इक्वल टू 4 and P equal to 5, so first to construct a set S. ऐसा कुछ ट्राई कर लो, फिर ऑब्जर्व करोगे. जस्ट यू टेक a equal to 4 and P equal to 5, then you consider the set S. S में क्या क्या एलिमेंट आएगा, कोई बताए? When a is equal to 4 and P is equal to 5, then you tell all the elements of the set S. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12 and 16. और ये चारों एलिमेंट को आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर देखो क्या क्या आ रहा है. क्या सबका रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है कि सेम भी आ रहा है? सर डिफरेंट ही आएगा. क्या क्या आ रहा है? 4 3 2 1. 4 3 2 1. Good. So see, the range of the remainder is in between 1 to P minus 1, means 5 minus 1 is here in this case, means 4.
तो रेंज कुछ भी ऐसे, लाइक सी टेक द अनदर एग्जांपल, like in this case your p is equal to 7 and a is, again you take 4, doesn't matter, a is equal to 4 and p is equal to 7. Now in this case we consider the construct the set S. Now tell me what is your S, elements of S, when your a is equal to 4 and p is equal to 7. सर 20 और 24 ऐड हो जाएगा। 20 and 24, good. 20 means 4, 8, 12, 16, 20 and 24. These are the elements of S. And now you tell me what is the remainders when all the elements of this set S is divided by 7. क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है? सर 4 1 5 2 6 3। Yes, that means you can see that remainder will be 1 in some case, exactly किसी में 1 आने वाला है, किसी में 2 आएगा, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, सभी रिमाइंडर 1 से 6 आने वाला है, कहीं ना कहीं इस प्लेस में होंगे। आई डोंट नो किसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, बट आएगा, देखो ध्यान से 1 से लेकर 6 तक सभी रिमाइंडर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। If you divide 4 by 7, you get the remainder 4. If you divide 8 by 7, you will get the remainder 1. If you divide 12 by 7, you will get the remainder 5. रिमाइंडर का देखो, पहले 4 आया, दूसरे लेवल पे 1 आया, तीसरे पे 5 आया, चौथे पे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 6 and then 3. So that is, see, variation अपन ने किस एलिमेंट को कौन सा डिवाइड करके क्या रिमाइंडर, बट पॉसिबिलिटी इसीलिए फॉर द इज इन बिटवीन 1 टू p minus 1 और सभी रिमाइंडर मिलने वाला है, रिमाइंडर छूट नहीं इन बिटवीन दिस ऑल। सी दैट व्हाटएवर यू चूज p and whatever you choose a, only condition is that p does not divide a. If you सर आवाज नहीं आ रही है।